I think if we look back over the last 10 years, we see fairly steady trends. We see that school facilities, in terms of infrastructure, in terms of teachers, have been steadily going up. And now we are in a position where I think that many schools have some of the basics that they need. Of course, there is still more to be done. But if we look at basic learning, things like just basic reading, basic arithmetic, we are kind of stuck and in some cases actually going down. The fact is that since right to education came in, there has been no dearth of intent, effort or investment going into education. But yet we see year after year after year that the results are nowhere near. In fact, they are going down. So we asked ourselves the question, why is this so? स्कूलों में शिक्षकों की कमी है. The quality of teachers we have is itself a question mark. Teaching as a profession is on practice-based talent. We do not reward good teachers enough. Many times, we actually ridicule a teacher who is not up to the mark. We have to work with what we have and bring back the dignity to the teachers. It's only when our teachers win in their classrooms that our education is truly going to win. There are 25 crore students to be taught in 21 different languages belonging to diverse socio-economic street. Problem is unique to our country. Therefore, a foreign copy-paste solution will not work. Students at a primary level have a low attention span. Student attendance is still a big problem. Atmosphere at home is not supportive. The fear of studies sets in early. बच्चों का स्कूल के बीच में पढ़ाई छोड़ देना बहुत बड़ी समस्या है. Learning needs to be visual, engaging, and above all, a lot of fun. Parents do not see value of education after a certain point in time. We've often seen that poor parents do not send their children to school regularly. They would rather have them go out and work. Parents are not aware of what their children are doing at school. There are no parents-teachers meeting. Communities and parents need to be truly engaged and they have to be made a partner in their children's education. Existing solutions aren't able to solve the rural education problem. If they could, they would have done it by now. Most of the content which is available is either in English or not aligned to the curriculum. Currently, EduTech solutions are far too expensive for rural India. Do it yourself. Videos don't work for primary level kids. EduTech needs to be accessible, available and affordable for the rural population in their own language. Improvement in our current B.Ed and M.Ed programs will take a long time to produce results. Most of the ad hoc teacher training is done outside the school and is not carried back to the classroom. The stakeholders like school management or district educational authorities have no way to see and control what is happening in the class. The process of rewarding the teachers, or for that matter, punitive action, is perception driven and sometimes on hearsay. Teaching learning must be aided and monitored where it happens, in the classrooms. And when we delve into this question, we come to the only obvious conclusion. Not only in education, but for anything, if the intent is there, the effort is there, and the investment is there, but the results are not coming, the only thing that could be missing is a methodology. And that's perfectly true for education in India also. We just lack a methodology to teach 25 crore kids in 20 odd different languages. The search for this methodology, guided by these insights, is what led us to two fundamental innovations. The first is what we call film-based teaching methodology, which is a unique and powerful approach to content design. And the second is a software platform that we call telltale. जिन नंबर्स के यूनिट्स यानी इकाई स्थान पे 1, 3, 5, 7 और 9 आएगा, यानी 1, 3, 5, 7, 9, वो सब तुम्हारे ऑर्डर.
अगर कोई आपकी क्लास में ऐसा बच्चा है जिसको थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, तो चाहे तो उसको अलग से पर ये वीडियो बार बार दिखाएं। सॉल्व करते हैं। सबसे पहले लाख के घर में आ गया 10, फिर 1000 के घर में आ गए 2 जीरो और बाद में 3 जीरो। ये बन गया 10 lakhs। In education, we are faced with a very interesting and very fundamental paradox. And that paradox is that repetition is important for learning, but repetition is boring. So the only obvious way to reconcile this paradox is to repeat the same thing again and again, but in different ways. And when you repeat the same thing in different ways, the internalization happens without the kids losing their interest. In film-based teaching methodology or FBTM, we do precisely this in what we call our multimodal approach. So in the same video, we use different modalities talking and reinforcing about the same subject area or the concept. And these different modalities could be sometimes the teacher is talking to the student, then there's something happening on the blackboard, then there's a mnemonic which comes, there could be an activity, there could be an animation, and there are various different types of things that can be used within the videos in a very judicious mix with a fundamental purpose of ensuring that repetition, but at the same time holding the attention of the child. The FBTM content follows a 5M design principle: multimodal, multilingual, modular, motivating, and morals and values aligned. How do we build a system where the school management or the district education authorities know exactly what is happening in a class? Is there any way they can see what students are doing, how teachers are teaching? I think one of the ways where this thing can be done is by using technology. If we use technology, everybody can be an active participant in the happenings in a classroom. If we look at most of the interventions that are happening in education, be it building toilets, clean toilets, midday meal, curriculum redesign, teachers training, all of them are happening outside the classroom. They are good and they are important. However, we need a way in which the classroom dynamics can be influenced, and in turn, if that can result into better student learning outcomes. Technology integrated teaching learning interface works on online as well as offline mode from inside the classroom. It facilitates 3 important teaching learning processes. First is planning. A teacher-friendly drop-down menu helps plan the FBTM sessions for the classes. Thus, a timetable is created by the teacher which can be accessed by all the stakeholders. The second process is delivery. At the scheduled time, the planned session pops up for delivery. The teacher plays a student video, practice sheet, or even conduct a test in the classroom. The third and the most important process is monitoring. The footprint of all the activities happening in the class through this software creates data. This data is useful to generate reports that can be accessed by principal, district education officer, and by parents to see exactly what has happened inside the classroom. An AI score at the teacher and school level is generated to appropriately reward the high-performing schools and teachers.
लेवल काफी हाई हो रहे हैं और बच्चों में अच्छी खुशी भी है कि हम आ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, मेरे स्कूल में ये चीज है। भारत लर्न के सौजन्य से ये BTM क्लास हमारे विद्यालय में चलाए जा रहे हैं, जो बच्चों को खासतौर से गणित के लिए काफी रुचिकरपूर्ण है। BTM के जरिए क्या है कि वो एक ऐसा रास्ता मिला है जिससे बहुत इजी वे मिला है जिससे वो बहुत जल्दी समझ पाते हैं। जो बच्चे को हम टेक्स्ट के माध्यम से, लिखित माध्यम से नहीं समझा पाते, उसको हम लोग वीडियो दिखाकर उस बच्चों को अच्छी तरह से, बेहतर तरीके से समझा देते हैं। नया चीज, अच्छा चीज हमारे उन छात्रों को दे रही है जो पिछड़े एरिया, ट्राइबल एरिया के हैं, उनको भी मिल रहा है। जो आपकी टीम है काफ़ी सहयोग प्रदान कर रही है बच्चों को नया नई चीज़ सिखाने में भी। गर्मी में इन्होंने कैंप लगाया था, गर्मी में आके भी इन्होंने सिखाया, अब बच्चे उसमें नई चीज़ें सीख रहे हैं। हम लोग पढ़ा रहे थे तो कुछ तरीका हम लोगों का जो अलग था, जो यहाँ पे BTM चल रहा है, इसके से मतलब बच्चों में भी काफ़ी मतलब उपस्थिति उन लोगों की कुछ बढ़ी है और बच्चे भी कुछ अच्छी तरह से सीख पा रहे हैं और हम लोग को भी काफ़ी मदद मिल रहा है इससे। इनसे जैसे हम लोग इकाई और दहाई से पढ़ाते थे तो उन लोग को इंग्लिश से भी मालूम हो गया है कि कहाँ से इकाई शुरू होता है, कहाँ से दहाई। जैसे 0 से लेकर 9 तक की संख्या इकाई होती है और 10 से लेकर 99 तक की संख्या दहाई होती है। ये सब उन लोग को मालूम हो गया है कहाँ से कैसे 1 10 100 सीक्वेंस से दिया है इसमें सीक्वेंस से दिया है कि इसके बाद क्या करना है, इसके बाद क्या करना है, मतलब उसका प्रोग्राम डिसाइड किया हुआ है कि कैसे कैसे आगे चलेगा, ये अलग है उसमें। अपने बच्चों की ओर से, अपने स्टाफ वालों की ओर से तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और इस तरह से मतलब दूसरे विद्यालय में भी आप लोग बढ़ाइए अपना NGO को, यही चाहेंगे। अब बच्चों को जब अभी से 1 साल चल रहा है, 1 साल चल गया तो आगे वालों को तो मेरे को लगता है और भी ज़्यादा अच्छा होगा इनके लिए, क्योंकि ये 1 साल पढ़ लिए हैं, आगे जाएंगे तो 6th क्लास, जैसे 5th वाले 6th क्लास पे गए तो वीडियो से तो पढ़ के जा ही रहे हैं, चीज़ें वो सीख के जा रहे हैं, तो उनको स्थानीय मान और विस्तारित रूप ये चीज़ें, बेसिक चीज़ें बिल्कुल नहीं बतानी पड़ेंगी। ये बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत ज़्यादा फायदा है इससे। बहुत उत्साहजनक परिणाम हमको मिले हैं। जिन जिन स्कूलों में BTM आपका काम कर रहा है, बच्चों की अटेंडेंस बहुत ज़्यादा हो गई है और बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ आपके इससे। लर्निंग आउटकम में हमने लास्ट ईयर NAS के रिजल्ट की एनालिसिस की थी हमने, तो एक्चुअल क्या था, चूँकि NAS का रिजल्ट हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रोफाइल से मिला था, लेकिन इसमें आपकी BTM की 2 सेलेक्टेड स्कूलें थी, तो उनकी जो पेपर्स रखे हुए थे वहाँ पर जाके हम दोबारा मैं व्यक्ति पर्सनली विजिट की थी और ये देखा कि मैथमेटिक्स में वो बच्चे बेहतर कर रहे हैं देन अदर स्कूल्स के, ये मैंने पाया है सबसे ज़्यादा। तो BTM को एक कंपलसरी फॉर्म में रखा जाए कि स्कूल में, क्योंकि ये सब्जेक्ट को इंटरेस्टिंग बनाती है। उसके साथ साथ क्या होता है, बच्चों को जो डिफ़िकल्टीज हैं मैथमेटिक्स, जिसको एक डर रहता है, बच्चे इतना इजी वे में सीखते हैं कि साथा यकीन नहीं होता है। हमको वीडियो से पढ़ना अच्छा लगता है। आरोही क्रम सीखे हैं, अवरोही क्रम सीखे हैं और सम विषम सीखे हैं, विस्तारित रूप सीखे हैं। क्योंकि पढ़ाई लिखाई में बहुत मन भी लगता है और मज़ा भी आता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। स्थानीय मान, विस्तारित रूप, असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर और हजार की संख्या पर का स्थान और इसका स्थानीय मान, ये सब सीखा हमने। इसलिए उसमें वीडियो चलता है और निधि सर हैं वो अच्छा से पढ़ाते हैं और वीडियो में समझाते हैं और प्रैक्टिस शीट भी कराते हैं। ये मशाल एक हमने जलाई तो है, हजारों दियों में लगाई तो है, रोशनी ख्वाब से अब कभी कम ना हो, नन्ही आँखों में ये चमचमाई तो है, सारथी ओ सारथी साथी रे